Okay, so today is 1.2.1.12.1 and let's learn loops in Python. IPYNB is the extension to create notebook. I'm connecting the kernel, so without kernel you cannot really run the files. So ये जो भी kernel होता है, this is our environment बोल सकते हो. इसके अंदर we are deploying or storing the packages. Like for example, if I say uh, you know like this pip install numpy, ठीक है. So it will do the installing and that will store into this particularly Python file. Okay, so यहाँ पर एक python.exe file है, ठीक है. The requirement is already there. Basically एक package होता है. This is a file. कि एप्लीकेशन की तरह होता है ये, ठीक है. सो numpy is an application यार, ऑब्जेक्ट या पैकेज बोल सकते हैं इसको. यू कैन कॉल इट पैकेज और लाइब्रेरी, ओके, थिंग्स लाइक दैट. और वो ये स्टोर होता है ये पर्टिकुलर वेरिएबल में और एनवायरमेंट में. तो आई विल आल्सो टीच यू हाउ टू क्रिएट एनवायरमेंट यूजिंग conda. सो conda में ऐसे करते, conda create name and then you can mention python version as in like 3 point python version, कोई भी python version that you want to mention. You can also work in previous version like 3.12, then it will create the environment. Okay, and you can activate what is environment. ये सब environment is जहाँ पर आप ये सारे packages store करोगे. You don't want to store these packages or download these packages inside your machine क्योंकि ये सारा use होता है जब भी तुम कोड रन करते हो, ठीक है. Let it be. So let's start with let's learn loops. Okay, let's learn loops in Python. Okay, let's learn loops in Python. So there are two types of loops that we have. The very first is for loop, and the very first is for loop. अरे भाई, let me go. And the second is while loop. ठीक है, while loop. So these both have the same functionality, but these both have different syntax. Okay, we will learn that. So the function is, it is to execute the set of statements multiple times. Okay, what is the function? Let me just write what I have said. So same functionality, but different syntax, right? And the another thing that I've said is the function. The function is like it is to execute the of set of statements. Okay, set of statements. How many times? Multiple times. Okay, multiple times. So we have already, like, while we were learning about list or uh, strings, right? While we were learning about list and strings, we have gone through this for loop. Okay, for loop we have gone through this. But now today we will understand this for loop in a broader way, like in a better way. Not in a way, we'll learn everything in a better way, but in a deeper way, right? In a deeper way. So let's get into it. So the first thing is, let's learn what is for loop. Okay, let's learn what is for loop. So पहले हम for loop शुरू करते हैं. So let's write about for loop, how it is, what is the syntax और ये कैसे work करता है, ठीक है. So it works like an iterator. Okay, it works like an iterator. So iterate क्या करता है? Iterates means
let me just give you one example. Let's say you have list 1 is equals to 1 comma 2 comma 3 comma 4 comma 5, okay, 56 or 6. So what iterator will do, iterate will act like a Mr. Mario again, like it will check first number, second number, third number, fourth number, fifth number. So it will iterate through this particular list. Iterate means घूमना, check करना, iterate like this, फिर से first पे आ जाएगा, ऐसे 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 फिर से first पे आ जाएगा, ठीक है. So it works like this. It will count 1, 2, 3, 4, 5. Then it will again come here and 1, 2, 3, 4, 5. So this is called as iteration. Okay, this is called as iteration. So this was just an example. So how many iterators are there? Okay, so iterators जो भी है, okay, so whichever the iterators are there, कहाँ पर they iterate, okay, from where, so we have seen this list only, ठीक है, list and string हमने देखी है, but it can work with string also, it can work with list also, it can work with tuple, which we will learn in coming lectures, it can work with set also, which again we will understand in the next lecture, it also works with dictionary, and it also works with range, okay, it also works with range. So agar there is a string, is equals to I will practice Python, ठीक है, if this is the same, if this is the string, right, so what the iterator will do is it will iterate through I, then space, then will I, L space, like this, okay, and then it will again come to the first word, and then this, like this, okay. So this is how the iterator will go through each and every element which is there in the string, yeah, list, yeah, then there is a tuple, set, dictionary, range, okay. These are data types, okay, these are data types. So basically when you want to iterate through any data types like these, what do you use? You use iterator, and for iterating you use basically for loop, okay, you use for loop. So let's understand the syntax of loop, okay, let's understand the syntax of, so this is like very easy function, ठीक है, easy function but very useful function. जैसे हमने लिस्ट देखा, लिस्ट इज समथिंग की बहुत यूजफुल है भाई, like it is like most these 5 files you will require in your entire life if you like work as a coder or data scientist or AI engineer, because this list is something that is like every day, even today also I worked on list. So similarly the for loop is something that you use most of the time, ठीक है. So अगर आपने सोचा कि मुझे नहीं भी सीखना है, then also you will get to know this because you will practice it that much, ठीक है. हर असाइनमेंट में you will get this loop. So let's let's try to focus, okay. So how syntax is there for loop, okay, for loop का syntax कैसा है. So very first you will write for, okay, the very first you will write for, then you will get a variable name, ठीक है, you will get a variable name जो कि एक iterator रहेगा. यहाँ पर कुछ भी दे सकते हो, you can do like you can even place your own name also, ठीक है. Then you will say in, ठीक है, you will say in, and then there is a this iterator or you can say data type, ठीक है, ये data type. तो अगर मैं इसको data type कहूँ, data type, ठीक है, data type, and then you will give this colon, ठीक है. और data type means ये आपको define होनी चाहिए. जैसे अगर मैं ऐसे कहता हूँ कि data type is equals to कुछ भी, ठीक है, कुछ भी like this, I will practice Python. So this becomes now a string, ठीक है, this becomes string. अगर मैं यहाँ पर list डालता हूँ तो ये list बन जाएगा, then set और tuple जो भी है, ठीक है. So how is the index? First आप यूज करोगे for,
then you will use any variable name, then you will use in operator, then you will use whatever the data types. So data types can be these many, okay, these many. Then you will enter. So automatically it will not come here, it will come inside this for loop. Okay, the pointer will come inside the for loop, and then you can execute anything like print variable name. ठीक है, ये variable name print करो, या you can print like any statement. You can write like statement 1, statement 2, you know, you can write anything like any code, any code. So it is again like a for loop, sorry, if loop, if and else statement. So if this is this, then do this. Okay, if this, if this code is true, basically ये तो true ही रहेगा, ये check नहीं कर रहा है, if always checks, but ये command है कि ये iterate करो this and from this data type. So let me just give you one example so that you can understand this. Okay, so that you can understand. So the very first example is, again, let's say I'm taking a string. So I'm saying I write code daily. ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कि I write code daily. So this is my iterator. ठीक है, या फिर मेरा data type है ये. So I want to iterate through, like basically I want to write this 5 times. ठीक है, या कोई भी मेरा है ना, क्या कहते हैं उसको, affirmation है. So I want to write this 5 times. ठीक है, so what I will do, I will use print function. ठीक है, I will use print function और मैं इसको ऐसे 5 times लिख दूंगा. So what it will do, it will give me this 5 times. I write code daily, I write code daily, I write code. But the same job can be done through this particular for loop using range function. ठीक है, using range function. So let me just give you one example. ठीक है, so same है हमारे पास. तो now I am using for loop. ठीक है, so I am using I is my variable name. ठीक है, and I am saying in is my operator and I am saying range of 5. ठीक है, range of 5. so अगर मैं ये range of 5 जो भी है इसको मैं अलग से प्रिंट करता हूँ, तो ये मेरी एक लिस्ट है. This is my list which is giving me 0 1 2 3 4, right? 0 1 2 3 4. This is my list. Okay. So what it will do, it will gone through this list like 0 1 2 3, like 0 1 2 3 4. Okay, means this I, okay, this I will go to 0 first, then go to 1, then go to 2, then go to 3, and then go to 4. ठीक है, देन अगर ये क्या करेगा, बस इसका यही काम, इट जस्ट गोज देयर, ठीक है. अगर आप यहां पर 15 कर दो, इट विल गो टू दिस एवरीथिंग, like इट विल जस्ट टच. और जब भी ये टच करेगा उसको, ठीक है, आप जो भी कोड इसके अंदर दोगे, whatever you give inside this, it will do that. So if I say string, ठीक है, so whenever this I is visiting this particular list, okay, is visiting to this particular list, it will repeat this task. Okay. So now if I say, it will, what it does, कि first ये I 0 पे चलेगा, इसको 0 तो मिल गया, तो इसने ये रन कर दिया. ठीक है, then it went to 1 मिल गया, then इसने इसको रन कर दिया. सिमिलरली ये 5 टाइम्स आ गया हमारे पास. ठीक है, ये 5 टाइम्स हमारे पास आ गया. सो इतना ही काम है फॉर लूप का. ठीक है, लॉजिक यही रहेगा कि आई विल विजिट हियर, लाइक वॉट एवर यू मेंशन इट हियर. सो मुझे ये 5 टाइम्स लिखना था, मैंने कहा फॉर आई इन रेंज 5 ये प्रिंट कर दो जितने भी टाइम रहेगा, जितने भी टाइम आई विजिट करेगा. ठीक है, आई विजिट करेगा. वन मोर एग्जांपल देता हूँ.
like we will take like quite a few examples so that we understand this. Okay, so let me just take the same code, and now instead of 5 I say 5 comma 5 comma 10. Okay, 5 comma 10. So this is also again 5 list. Okay, this is also again, अगर मैं इसको कहता हूँ list of range of this is also again the same. ठीक है, फर्स्ट टाइम क्या करेगा, आए 5 को विजिट करेगा, देन ये प्रिंट हो जाएगा, देन इसको विजिट करेगा, देन यहाँ पर जो भी रहेगा वो चलेगा। ठीक है, यहाँ पर देन अगेन थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम यही प्रिंट होगा। प्रिंट मतलब यहाँ पर क्या है, प्रिंट स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग क्या है, आई राइट कोड डेली। ठीक है, प्रिंट क्या है, आई राइट कोड डेली। सो इफ आई रन दिस यू कैन सी 5 टाइम्स। सो दिस इज लाइक यहाँ पर क्या मेंशन करते हो आप उसके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, इसके ऊपर डिपेंड है। सो नाउ आई एम गिविंग यू वन मोर एग्जांपल, सिमिलर एग्जांपल, but am saying I am saying instead of this I want you to answer this। ठीक है, 2। ठीक है, और मैं क्या कर रहा हूं यहां पर, I am putting a list 1 2 3 1 2 3। ठीक है, so now ये कोड क्या करेगा, you need to tell me। ठीक है, ये कोड क्या करेगा, you need to tell me। ठीक है, I'm just putting this code inside a, so मुझे क्या आउटपुट आना चाहिए यहाँ पर, what output I should get। so this is my string, मैंने इसको string कहा है, but that is actually not a string, that is a list। ठीक है, लेकिन this is just a variable, मैं यहाँ पर कुछ भी लिख सकता हूँ। ठीक है, मैं कह रहा हूँ for I in range 2, for I in range 2, so that will be a list of then a range of 2। ठीक है, रेंज ऑफ 2, तो उसका आउटपुट क्या रहेगा, आउटपुट क्या रहेगा 0, 1। ठीक है, 0, 1। so this I will visit to 0 and 1, so what output I will get here। so okay, बहुत आउटपुट आ गया पर 1 2 0 like क्या है, 1 2 3 2 टाइम्स, 1 2 3 2 टाइम्स, 1 2 3 2 टाइम्स, and you are right। let's check if you are right or not। yes you are right। राइट, मैं आपको यहाँ पर चेक कर देता हूँ आपकी, यू आर राइट, यू आर राइट, राइट 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 राइट। ठीक है, नाउ यू आर पास्ट, मैंने चेक कर लिया आपको। चल, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट नॉट रियली नेक्स्ट, लेकिन लेट्स अंडरस्टैंड टॉपिक वाइज जाते, लाइक लूप ही अंडरस्टैंड करेंगे लेकिन डेटा टाइप वाइज जाते। लेट्स से फॉर लूप ऑन स्ट्रिंग। ठीक है, फॉर लूप ऑन स्ट्रिंग, तो अभी हमने लूप ही सीखा फॉर लूप फॉर रेंज। ठीक है, रेंज के लिए सीखा। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड फॉर स्ट्रिंग। ठीक है, सो नाउ लेट्स से आई एम सेइंग लिस्ट स्ट्रिंग 1। ठीक है, आई एम सेइंग स्ट्रिंग 1। सो आई एम गुड गुड एट कोडिंग। ठीक है, स्ट्रिंग 1 इज आई एम गुड एट कोडिंग। ठीक है, string 1 is I am good at coding। so what I am doing is I am saying for I, so I को प्रैक्टिस कर लो क्योंकि इंडस्ट्री में यही यूज होता है। for I in string 1। ठीक है, so क्या कर रहा हूं मैं अभी, ये जो I एज अ इटरेटर है उसको मैं string 1 में घुमा रहा हूं। ठीक है, for I एज अ इटरेटर मैं string 1 में घुमा रहा हूं। so what it will do is it will go here first, then here, basically यहाँ पर भी आएगा, यहाँ पर भी आएगा, यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, every place। ठीक है, every place it will come।
like this, like this. Okay. Anyways, so then whatever you give here, like at bottom, you say like print India. Okay, whatever, like you can say anything, print India. So if I run this, it will print India how many times? These many times. जो भी इसका length रहेगा, ठीक है? Whatever the length of, whatever the length of string, ठीक है? Whatever the length of string, जो भी इसका लेंथ रहेगा वो आएगा. जैसे प्रिंट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग वन, ठीक है? सो स्ट्रिंग वन का लेंथ कितना है? 19. सो यू कैन सी दिस इंडिया हैज प्रिंट, दिस इंडिया word has printed 90 times, ठीक है? 90 times. so so basically this I, but ये I ने क्या करा, इसको विजिट किया एक, तो ये एक बार प्रिंट हो गया क्योंकि हम प्रिंट करने के लिए बोल रहे हैं. स्पेस को विजिट किया, सेकेंड बार प्रिंट हो गया, ठीक है? सेकेंड बार प्रिंट हो गया. और सिमिलरली जब कोडिंग तक आया था वो 19th बार प्रिंट हो चुका था, ठीक है? दिस गॉट प्रिंटेड 19th टाइम, ठीक है? सो दिस इज हाउ द फॉर लूप्स वर्क्स विथ, द फॉर लूप वर्क्स विथ स्ट्रिंग, ठीक है? तो नाउ अगर इसको आप डबल, ये जो भी अगर आपका डबल मतलब बहुत लंबा आउटपुट रहता है, इसको डबल क्लिक यहाँ पर करते हो तो इट कोलैप्स, ठीक है? लाइक बेसिकली ये अंदर चले जाता है यहाँ पर, और यहाँ पर यू कैन एक्सपैंड द सेल. So let me just give you the same example, but instead of printing this, let's say I will just print I, ठीक है? I print करता हूँ मैं, I print करता हूँ. So you will get to know जो I है ना, I कहाँ कहाँ पर विजिट कर रहा है, कैसे विजिट कर रहा है, ठीक है? कैसे विजिट कर रहा है. So now I am just printing the I, ये जो I है ना इसको ही प्रिंट कर रहा हूँ मैं. If I do this, you can see this. 19 क्यों? अच्छा ये 19 इज फॉर दिस, ठीक है? आई को फिर ये फर्स्ट आई पे आई को विजिट कर रहा है, ठीक है? इनिशियली इसने क्या करा, आई को विजिट किया, देन देयर इज अ स्पेस, यहाँ पर आप स्पेस देख सकते हो. देन ए को विजिट करा, एन को विजिट किया, देन देयर इज अ स्पेस, ठीक है? ए को एन को स्पेस, एंड इट गोज ऑन, ठीक है? इट गोज ऑन. सो दिस इज हाउ द बैकएंड वर्क्स फॉर आई, ठीक है? दिस इज हाउ द बैकएंड वर्क्स फॉर आई. बट इसके साथ तुम कुछ भी कर सकते हो. लेट्स से आई नीड ऑर्डर, ठीक है? ऑर्डर ऑफ आई, मतलब ऑर्ड मतलब इफ यू नो द ऑर्ड, वी गेट द वी गेट द ऑर्डर, लाइक हमने वो नंबर सीखे, राइट? ईच लेटर ईच लेटर इज असाइन टू सम नंबर, ठीक है? सम नंबर. सो स्मॉल ए 97 को था, ठीक है? देन 100, ठीक है? So I just got the order here, ठीक है? I've just got the order here. You can say anything here, like you can say what you can say, like a is equals to a plus 1, ठीक है? a is equals to a plus 1, यहाँ पर ये नहीं आएगा. एंड व्हेन आई से a is equals to 0, ठीक है? सो अभी मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पर कि a में एक ऐड करते जाओ. जब भी whenever I visit any number, a में एक ऐड करते जाओ, ठीक है? a में एक ऐड करते जाओ. whenever I visits any word, एक को a में ऐड करते जाओ, एक ऐड करते जाओ. what is the initial value of a? 0. तो फर्स्ट विजिट में एक ऐड होगा, सेकेंड विजिट में दो ऐड होगा. यू कैन सी एरर मिल गया हमें. so what say print unexpected argument a. got unexpected argument a. लेकिन हमने तो मेंशन करा है ए को. anyways, let's go back to what we were doing initially. और इसको यहाँ पर रखते हैं ऑर्ड ऑफ ए, ठीक है? ऑर्ड ऑफ आई. तो यहाँ पर हमें ये आउटपुट आ रहा था, बट इट डज द, मैं वो वाला ये वाला कोड भी आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ, बट इट इज जस्ट
getting some conflicts here, but it works the same. ठीक है, it works the same. So understand, like यहाँ पर तो समझ में आ गया क्या कर रहा है. I is visiting this string because हमने यहाँ पर string mention करा है. मैं अगर कुछ भी और mention करता हूँ, चलो let's take some another example. ठीक है, इसको मैं collapse कर देता हूँ. Let's take another example like string 2. ठीक है, string 2, और यहाँ पर I am saying I am learning loops. ठीक है, I am learning loops. So now if I say for I again, or you can say like character, character, or anything you can say here in string 2. ठीक है, in string 2, and I'm saying print character is character. ठीक है, तो ये यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा. दिस कैरेक्टर विल गेट प्रिंटेड हियर. ठीक है, सो यू कैन सी एवरी वर्ड. बेसिकली पहले यहाँ पर क्या था, आई था. सो नाउ कैरेक्टर है हमारे पास, एंड आई एम जस्ट सेइंग, यहाँ पर मैंने प्रिंट आई बोला था, यहाँ पर मैंने क्या बोल रहा हूँ, प्रिंट कैरेक्टर. तो इसके अलावा तो कुछ है नहीं कि ये बस एक स्ट्रिंग है. दिस इज जस्ट अ स्ट्रिंग. ठीक है, दिस इज जस्ट अ स्ट्रिंग, but this is a variable. So now you can say character is I. First character is I, then the second character is space, then A. ठीक है, right? Something like this. Okay, something like this. And you can also like say like this here also. You can have this another print also. Print, you can say India won the match. So this will also print along with it. एवरी टाइम लाइक कैरेक्टर आई आ जाएगा पहले, फिर इंडिया वन द मैच. कैरेक्टर स्पेस आ जाएगा, इंडिया वन द मैच. कैरेक्टर ए, इंडिया वन द मैच. राइट, सो इट इटरेट्स, एंड दिस इज हाउ इट वर्क्स. लेट्स टेक, so let me know if this is good, like if you are understanding this. मोटा मोटी ये कॉन्सेप्ट है कि ये जो आई है, इट विल गो थ्रू द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग. पूरा जो भी लेंथ है वो स्ट्रिंग में जाएगा, और यहाँ पर आप जो भी मेंशन करते हो वो प्रिंट होगा या वर्क होगा, वॉट एवर यू डू इट. ठीक है, आगे के जो भी एग्जांपल्स रहेंगे उसमें यू विल गेट टू नो. ठीक है, यू विल गेट टू नो. सो इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस, आई नीड यू टू टाइप यस इन द कॉमेंट्स. क्या हम इवन और ऑड नंबर कर सकते हैं क्या? यस, यस, वी कैन डू दिस. ठीक है, वी कैन डू दिस. तो आई गेस लास्ट टाइम इवन एंड ऑड नंबर के लिए हमने फॉर लूप ही यूज करा था. सो दैट विल आल्सो आई विल एक्सप्लेन. ठीक है, वो भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ इसी क्लास में. ठीक है, सो लेट्स गो टू लाइक वी आर स्टिल लर्निंग लूप्स. ठीक है, बट लूप्स इन और लूप्स ऑन लिस्ट. अभी हम लिस्ट पर देखेंगे. अभी हमने क्या क्या देखा. फर्स्ट देखा लूप ऑन रेंज फंक्शन. देन हम देख रहे थे लूप ऑन स्ट्रिंग्स. ठीक है, स्ट्रिंग्स क्या होता है, एनीथिंग विच इज इन डबल कोट, सिंगल कोट और ट्रिपल कोट्स. ठीक है, नाउ हम देखेंगे लूप्स ऑन लिस्ट. और लिस्ट क्या होता है, वी ऑल नो, लाइक हमने ये 5 डेज लिस्ट पर दिया है. 5 डेज या 3 डेज में शायद ये खत्म हो गया था. ठीक है, तो 3 डेज हम लिस्ट सीखे हैं. सो लेट्स अंडरस्टैंड लूप्स. ठीक है, सॉरी, लिस्ट विथ लूप्स. सो let me just take a list. Let's say list 1 is equals to 2 comma 5 comma something comma and then 9. ठीक है, anything which is in square braces and separated by comma is list. ठीक है,
is list. So now if I say for I in list 1, okay, for I in list 1 print I, okay, for I in list 1 print I. So without teaching this, I want you to answer this. I'm not teaching you this. I just want you to know what is the output. What is the output? So write down in the comment what is the output. Write down in the comment box what is the output. Okay, write down in the comments what is the output. Just whatever you understand, just write it there. Okay, whatever you understand, just write it there. Let me know if you are getting something like अंदाजा क्या हो सकता है? What is your guess here? So my guess is like what I my thinking is I first इसको visit करेगा, then ये print करेगा, इसको visit करेगा, then ये print करेगा, इसको visit करेगा, then again ये print करेगा. लेकिन print क्या करेगा? What it will print? So write down the answer in the comments if you guys get it. So let's wait for a second. 20 seconds के लिए wait करते हैं. 229 string 7. What is this string 7? 2 4 something something something. Okay. So I think this is right. This is right. This is right. This is not right. String 7 नहीं आएगा. ठीक है. String 7 नहीं आएगा. Okay. So let's do this. So I'm just running this. You can see what happened is I is visiting here. I is going to 2. ठीक है, 2 पे चले गया, लेकिन हम कह रहे कि प्रिंट आए. अगर I 2 पर चले गया तो 2 प्रिंट हो जाएगा. Then when I goes to 4, 4 will get printed. When I goes to 5, 6, 7, 6, 6, 9 or everything. So every element will get printed. ठीक है, every element will get printed. So whatever you say here, it will do. ठीक है. तो और यहाँ पर जो भी लिखोगे आप इन, यहाँ पर जो भी लिखोगे वो उसको चेक करेगा और यहाँ पर जो भी लिखोगे वो काम करेगा. So let's take one more example. Let's take one more example और उसमें हम और थोड़ा डीपर जाने की लाइक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी में इम्प्रूव करने की कोशिश, जस्ट फॉर योर ब्रेन टू ठीक है. अभी ये और एक लिस्ट मैंने ले ली. ठीक है, आई हैव टेकन वन मोर लिस्ट. आई एम सेइंग लूप नम इज इक्वल्स टू 0. ठीक है, लूप नम इज इक्वल्स टू 0 जो मैं पहले एग्जांपल देना चाहता था, अभी मैं आई एम गोइंग टू डू दैट. नाउ आई एम सेइंग फॉर आइटम इन लिस्ट 2. ठीक है, फॉर आइटम इन लिस्ट 2, फॉर आइटम इन लिस्ट 2 print loop number in list is, ठीक है, list is loop number. ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, we have this list. ये आइटम जाएगा लिस्ट को विजिट करेगा, देन व्हाट यू डू इज प्रिंट करो लूप नंबर. व्हाट इज लूप नंबर इज 0. ठीक है, इज 0. सो इफ आई रन दिस एवरी टाइम वी विल गेट ओनली 0 0 0 0 0 0 0 0, बिकॉज हम बोल रहे हैं कि यहाँ पर 0 प्रिंट करो बेसिकली, क्योंकि लूप नंबर इज 0. बट आई डोंट वांट दैट बिकॉज आई वांट टू नो हाउ मेनी लूप्स आर देयर. ठीक है, आई वांट टू नो हाउ मेनी लूप्स आर देयर. ठीक है, सो व्हाट आई विल डू इज आई विल से loop number is equals to loop number plus 1. ठीक है, loop number plus 1 मीन्स जब ये फर्स्ट टाइम यहाँ पर विजिट करेगा
सो ये हो जाएगा लूप, लूप व्हाट 1, राइट, ये हो जाएगा लूप 1। सो सो यहाँ पर बेसिकली एक ऐड करा जाएगा कहाँ पर, लूप नंबर में, ठीक है। व्हेन इट विल गो टू द सेकेंड, इट विल गो टू द सेकेंड, सो अभी नम का वैल्यू एक एक है, सो 1 + 1 इज नाउ 2, ठीक है। सो यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ पर आ जाएगा 2 एंड सो ऑन, ठीक है। 2 + 1 3, देन 4, देन 5। सो लेट्स रन दिस नाउ, ठीक है। So you can see 0 1 2 3 4 5 6 7, so we have 8 loops, ठीक है, 8 लूप है, 8 लूप है। and I can also say like print the item, ठीक है, print the item, so you can see हमारा जो item है, item is what, this, these elements are also getting printed, so I will just comment this out, keep this, ठीक है, I will just keep this। so first time क्या होगा, फर्स्ट टाइम लूप नंबर ही प्रिंट होगा विच इज 0। देन हम कह रहे हैं कि एवरी टाइम दिस विजिट उसमें ऐड करो 1, ठीक है, उसमें ऐड करो 1, देन 1 गॉट एडेड, देन 2, देन 3 4 5 6 7, ठीक है। मतलब फर्स्ट टाइम क्या रहेगा, इट इज 0 जो गॉट प्रिंटेड, देन सेकेंड टाइम 0 + 1 एक हो गया, देन थर्ड टाइम 1 + 1 is 2, 2 + 1 is 3 4 5 6 7, ठीक है, 7। Is there any confusion here? Is there any confusion here? If there is any confusion, just let me know, ठीक है। If there is any confusion, just let me know. Okay, I will go through like multiple examples, so you can understand this much better, ठीक है। This is not really difficult, like अगर ये आपने समझ लिया, so I am saying 50% of the Python आज आपने समझ लिया, ठीक है। अगर ये आप समझ जाते हो, so you have understood 50% of the Python, ठीक है। So if there is any question, drop in the comments, ठीक है। If there is any question, drop in the comments. So all good, I think. So let's go to the next example. So let's take list 3 is equals to 55 44 33 11 77, ठीक है, 55 whatever it is। so now so now I am again saying, तो एक काम करता हूँ मैं, एक काम करता हूँ, तो I want the output is equals to like this 55 44 33 11 and 77, ठीक है। I want the output something like this, I want the output something like this। So what should be my code, ठीक है, what should be the code। so so आप कमेंट बॉक्स में write the code, write the code in the comment box। it's little bit confusing, ठीक है, yes it is little bit confusing because there are quite a few things that we are learning, ठीक है, quite a few things that we are learning at the same time, ठीक है। those who are understanding this, those who are getting this, you can write this code very simple, like very simple, ठीक है। मुझे ये फॉर लूप यूज करके यहाँ पर राइट करना है। मीनवाइल, ठीक है, अगर ये समझ में नहीं आता है ना, लेट इट बी, लेकिन हम ये तो समझ गए, ठीक है, ये तो समझ गए कि एक लिस्ट था, मुझे आई को इसके अंदर इटरेट करना था। सो आई गॉट, इफ आई से प्रिंट आई, तो मुझे ये सारे नंबर्स मिल गए, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या डिफरेंट कर रहा हूँ, अगर मैं इसको एंड इसको मैं प्रिंट आउट कर देता हूँ, एंड इफ आई से प्रिंट आइटम, इट डज द सेम, ठीक है, इट डज द सेम, बट एडिशनली मैंने क्या करा, प्रिंट प्रिंट लूप नंबर भी कर दिया। सो दिस इज, हमने ये चीज सीखी है जब हम प्रिंट फंक्शन सीख रहे थे, ठीक है।
वी हैव लर्न दिस व्हेन वी वर लर्निंग प्रिंट फंक्शन। अगर किसी को याद नहीं आ रहा है, अगर किसी को याद नहीं आ रहा है, दिस इज अ गुड कोड, ठीक है। अगर किसी को याद नहीं आ रहा है तो आई विल एनकरेज यू टू, डिलीट ही कर दिया मैंने, आई डोंट नो विच चैनल इट विल ओपन, और यू कैन गो हियर, यू कैन गो, यू कैन गो हियर, ठीक है। यहाँ पर 1.3 में प्रिंट फंक्शन एक्सप्लेन कर रहा है। सो दिस इज द क्लास रिकॉर्डिंग, शॉर्ट वीडियो है, print ठीक है, 18 मिनट्स का शॉर्ट वीडियो है। and दैट यू हैव टू लाइक, इसको समझ लो, प्रिंट एंड डिस्प्ले फंक्शन कैसा है, क्या है, अंडरस्टैंड दिस वीडियो, ठीक है। गो थ्रू, गो इन डीप, लाइक दिस इज लाइक प्रैक्टिसिंग इज द की गाइस, ठीक है। सो मैं बस कह रहा हूँ कि लूप नंबर प्रिंट करो। सो इफ आई डू दिस, इट विल जस्ट प्रिंट लूप नंबर 0, तो ये 0 है, बस ये प्रिंट हो जाएगा, 0 विल प्रिंट। यहाँ पर आई एम जस्ट सेइंग कि +1 ऐड करो। सो अगर किसी को याद होगा, वी वर लर्निंग दिस बिस्कुट वाला, बिस्कुट क्या होता है गाइस, बिस्किट होता है, किट होती है, नहीं होती है। सो बिस्किट का हम प्राइस देख रहे थे 5 रुपीज, इफ एनी वन रिमेम्बर्स। सो एज सुन एज डेज इंक्रीज, तो हमने क्या करा था, बिस्किट में बिस्किट में बिस्किट में 1 रुपया प्लस कर रहे थे। एंड इफ आई नाउ रन दिस, इफ आई नाउ रन दिस, सो बिस्किट की वैल्यू इनिशियली क्या है, 5 रुपीज है। So if I now run this, what will happen? I will get 6. If I now again run this, 7. Again run this, 8. Again run this, 9. So मैं यहाँ पर मैन्युअली रन कर रहा हूँ, but see this is the same, right? Biscuit is equal to biscuit plus 1. तो यहाँ पर loop is equal to loop plus 1. So loop का वैल्यू कितना है, 0। मैंने पहले बिस्किट का वैल्यू कितना रखा था, 5, ठीक है। अगर मैं बिस्किट का वैल्यू 0 कर देता हूँ, and if I say, इफ आई रन दिस, बिस्किट अभी क्या हो जाएगा, 1, अगेन 2, 3, 4, 5, बट मैं ये मैन्युअली रन कर रहा हूँ, ठीक है। आई एम मैन्युअली रनिंग दिस, बट हियर लूप क्या करता है, ये आइटम जैसे ही विजिट करेगा, ये एक रन हो जाएगा, ठीक है, एक रन हो जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा। देन इफ आई डू दिस, दिस इज द सेकेंड रन, 1 आ जाएगा, यहाँ पर 1 ऐड होगा ना, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सो ऑन। तो ये भी उस तरीके से अपडेट होते रहेगा, अपडेट होते रहेगा। मैंने बस यहाँ पर एक प्रिंट स्टेटमेंट डाल दिया। सो ये हमें हर एक इटरेशन दिखा रहा है, ठीक है, हर एक इटरेशन दिखा रहा है। लेकिन अगर मैं ये प्रिंट निकाल दूं, इफ आई रिमूव दिस प्रिंट, इवन दिस प्रिंट, एंड इफ आई ओनली से, इफ आई ओनली से प्रिंट, नॉट प्रिंट, if I say loop number outside this loop, ठीक है, outside this loop, outside this loop, so it will just give me the final price of that biscuit, ठीक है। बेसिकली इसके लूप के अंदर रहेगा तो हमें आइडिया आ रहा है, हमें दिखता है कि इसका वर्किंग कैसे हो रहा है, ठीक है, हमें दिखता है इसका वर्किंग कैसे हो रहा है। सो इफ यू आर गेटिंग दिस मोर कंफ्यूज, देन छोड़ देते हैं। आई विल जस्ट give you more examples and more examples so that you can automatically understand everything. So let me just check the code. So we are saying list 3 is equals to, for I in list 3 print I, for I in list 3 print I. So I think this is also right, this is also right, okay. So let's take this code and print it here, ठीक है। तो यहाँ पर सेमीकोलन चाहिए था, ठीक है, यहाँ पर सेमीकोलन चाहिए था, लेकिन ठीक है, उतना तो हम समझ सकते हैं। Have you given, so this is more correct, ठीक है, this is more correct, यहाँ पर सेमीकोलन चाहिए था। So if I now say, if I print this, I will get the output, okay, I will get the output. So I am glad that you are getting this for loop, okay, you are getting this for loop,
because when I say for loop, if you understand for loop, ये क्या क्या 50%. This is a huge number, guys. You have understood 50% of Python, and I will say congratulations. ठीक है? I will say congratulations. So this is a celebration time. ये तो मजा आ रहा है यहाँ पर ये करना. Okay, okay. So I think this is it for today, because this is like vast, vast and much deeper. Like as I said, like you will be learning this, you will be using this much every day, every day. So this is all about a loop function. This is not end. So हमने बस string and list देखा है. Tomorrow we will say tuple, set, dictionary, range, right? Everything, and then we will understand this while loop. Okay. All right, guys. So if you have understood today's lecture, you know what to do. You need to type a win with long ends in the comment box so that we can close today's session. Okay. So if you understood, win win win. Great, great. ठीक है. All right. जिसको थोड़ा सा confusion है, समझ में नहीं आ रहा है, तो हम ना I have I'm adding the YouTube videos, तो उसको go through कर लो, क्योंकि अगर आपका past मतलब जो lectures है वो अगर नहीं समझे तो there will be some difficulty, क्योंकि ये these are the same things. ये variable हमने सीखा था, ये print functions हमने सीखे थे, range function मैंने सिखाया था, then in operator हमने सीखा है, then again print, ठीक है, then range function सीखा है, list function सीखा है, then len function सीखा है, like everything, odd function सीखा है, everything that I have taught, right? Everything I have taught in the previous lecture. So इसको हम increment कहते थे, right? Increment by 1, ठीक है? So we have also learned this, right? We have also learned this. We have also learned this. Then this is also increment. This is a part of uh, string and all. So that's it for today. Tomorrow we will take few more examples and try to understand this as much as we can. All right, guys. Bye bye. Good night. Take care.